I have told you in the previous class this particular diagram. The respiratory volume. There are 4 different type of volume and 5 different type of capacity. This is what? The inspiratory capacity, then expiratory capacity, functional, residual capacity, then this is vital capacity and this is total lungs capacity. तो ये जो 4 वॉल्यूम आपको मैंने समझा दिया था, कोई दिक्कत नहीं है. यहाँ से हम लोग नंबर नेक्स्ट में आते हैं. रेस्पिरेटरी कैपेसिटी. Respiratory capacities. Under that, the first number 1. Inspiratory capacity. IC. IC का definition क्या होगा? The volume of air inspired normal as well as forceful. Amount of air inspired normal as well as और and लिख दीजिए forceful. So IC is equal to PV plus IRB. अमाउंट कितना होगा बताइए. IRB का वॉल्यूम कितना था देखिए तो चेक करिए तो 2500 to 300 2500 to 3000 था कि नहीं. Yes sir. And TB कितना था 500. That will be approximately 3000 to 3500 ml. Number 2, expiratory capacity. EC. This is the amount of air. The amount of air expired normally as well as forcibly. So this is equal to PV plus ERV, and that is equal to ERV का वॉल्यूम देखिए 1000 to 1100 था है ना. That will be maximum 1500 to 1600 ml. Number 3. Functional residual. Residual है कि रिजर्व है और इसीलिए ये क्वेश्चंस में आएगा फुल फॉर्म FRC. एक जगह पे रेसिडुअल होगा, एक जगह पे रिजर्व होगा. फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी. This is approximately amount of air present in lungs. जब भी हम lungs लिखते हैं ना याद रखिए ये both the lungs है, ठीक है. So amount of the air present in both lungs after normal expiration. नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद जो एयर लंग्स के अंदर प्रेजेंट रहेगा दैट इज कॉल्ड एज FRC. FRC is equal to what?
FRC is equal to what? क्या होगा? After the normal expiration, what will be the remaining amount of air? ERV plus RV, right? अमाउंट कितना हो जाएगा बताइए? ERV का अमाउंट कितना है? ERV का अमाउंट कितना था? 1100 to 1200 and sorry ERV का 1000 to 1100 RV कितना है? 1100 to 1200 तो मिला के कितना हो जाता है? ऑलमोस्ट 2500 के आसपास होगा कि नहीं? So FRC that is 2500 approximately. Next number 4. Vital capacity. Amount of air forcefully inspired. Amount of air forcefully inspired after forceful expiration. Or amount of air forcefully expired after forceful inspiration. इसका मतलब समझिए, मैंने आपको दो डेफिनेशन लिखा है वाइटल कैपेसिटी का. फर्स्ट डेफिनेशन क्या है ना? आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन द अमाउंट ऑफ एयर व्हिच इज फोर्सफुली इंस्पायर्ड इज कॉल्ड एज व्हाट? VC. सेकंड डेफिनेशन मैंने क्या लिखा है? आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन द अमाउंट ऑफ एयर फोर्सफुली आउट और एक्सपायर्ड. दोनों डेफिनेशन याद रहेगा. अभी मैं ये चीज एक को एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो. लेट्स सी दिस पर्टिकुलर डायग्राम अगेन. देखिए वाइटल कैपेसिटी का डायग्राम के साथ यहाँ पे मैच कर रहे हैं हम लोग. फर्स्ट डेफिनेशन क्या था? आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन द अमाउंट ऑफ फोर्सफुल एक्सपिरेशन, राइट? सपोज टू बी आपने फोर्सफुली इंस्पायर्ड कर दिया तो आपके लंग्स के अंदर पूरा चारों पूरा फुल्ड है कि नहीं? ठीक है. अमाउंट ऑफ एयर आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन द लंग्स इज कंप्लीटली फिल्ड अप. अब आपने क्या किया ना? फोर्सफुली एक्सपायर्ड किया तो ये लॉस होगा, ये लॉस होगा, ये लॉस होगा. आरबी तो लॉस नहीं होगा. देन दीज थ्री कलेक्टिवली कॉल्ड एज व्हाट? VC. तो मैंने आपको क्या डेफिनेशन लिखाया? आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन द अमाउंट ऑफ एयर फोर्सफुली एक्सपायर्ड इज कॉल्ड एज VC. समझ में आया फर्स्ट डेफिनेशन? सेकंड डेफिनेशन रिवर्स कर देते हैं. आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन, after forceful expiration the amount of air which is forcefully inspired. आपने forcefully expired कर दिया तो आपके lungs के अंदर ये खाली होगा, ये खाली होगा, ये खाली होगा. ठीक है. अभी आपने forcefully inspired किया तो forcefully inspired किया तो क्या क्या filled होगा? ये full होगा, ये full होगा, ये full होगा कि नहीं? then ये तीनों मिला के क्या है? so amount of air forcefully inspired after expiration or amount of air which is forcefully expired after forceful inspiration is called as what? ना vital capacity. तो vital capacity क्या हो जाएगा ना? TB plus IRB plus ERB और IC plus ERB और EC plus IRB और TLC minus RB और FRC plus नहीं नहीं TLC minus RB हो जाएगा. समझ में आया कि नहीं? और भी कॉम्बिनेशन बहुत सारा होगा आप लोग को, इसीलिए मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में ये जो ग्राफ है बहुत जरूरी है. so that vital capacity is equal to TB plus ERB plus IRB or we can say
IC plus ERV और EC plus IRV और क्या होगा TLC minus R and the amount is approximately 35,000 to 3,500 to 4,500 ml. Last number 5, total lungs capacity. TLC the amount of air maximum present in both lungs. The amount of air present maximum in both lungs is called the TLC, and that is equal to VC plus R. बाकी कॉम्बिनेशन से आप कर सकते है कि नहीं? तो ये क्या है एग्जैक्टली ना टीबी प्लस आईआरबी प्लस ईआरबी प्लस आरबी इज इक्वल टू टीएस. चारों वॉल्यूम को मिला के टोटल लंग्स कैपेसिटी. द क्वांटिटी इज अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा सोचिए तो कितना हो जाएगा अगर आप मिला देंगे. टीबी क्या है 500, आईआरबी कितना है 2500 टू 3000, ईआरबी कितना है 1000 to 1100, आरबी कितना है 1100 to 1200. तो अप्रोक्सीमेटली दैट विल बी 5800 ml. एंड ये जो 5800 ml है ये वेरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. कम किस में होगा? स्मोकर्स के केसेस में कम साइज होगा. हाँ नहीं, एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है कि स्मोकर्स एंड नॉर्मल ह्यूमन बीइंग किसमें आरबी का अमाउंट कम होगा, किसमें आरबी का अमाउंट ज्यादा होगा? जिसका इफेक्टिव वेंटिलेशन है, इफेक्टिव ब्रीदिंग है, उसके केस में आरबी कम होगा. जो इनइफेक्टिव वेंटिलेशन और ब्रीदिंग रेट है उसमें आरबी ज्यादा होगा. तो स्मोकर्स में आरबी रेट, आरबी क्वांटिटी मोर और लेस? मोर. नाउ द नंबर 6. मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम. The amount of air inspired or expired per minute. With the amount of air inspired or expired per minute. तो एमआरपी कैसे कैलकुलेट करेंगे? ब्रीथिंग रेट मैंने क्या बताया था 12, याद है 12 टाइम्स पर मिनट. एंड टीबी कितना है अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड पर नॉर्मल ब्रीथिंग इज कॉल्ड एज व्हाट ना टीबी. तो एमआरपी क्या हो जाएगा ना रेट ऑफ ब्रीथिंग into TB. That will be equal to 12 into 500 is equal to 6000 ml or 6 liter. So the amount of air which is inspired or expired per minute is 6000 ml or 6 liter. Number 7 के number 6 के बाद number 7 आ जाता है. Alveolar ventilation rate. Alveolar ventilation rate AVR is the amount of air exchanged. The amount of air exchanged
at alveoli per minute. तो ये क्या हो जाएगा, कितना एक्सचेंज होता था पर मिनट पर टाइडल वॉल्यूम का कितना अमाउंट एक्सचेंज होता था, 150 या 350? अरे बताइए ना, प्रीवियस क्लास में ही तो डिस्कशन किए हैं. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एयर टू बी एक्सचेंज एट द साइट ऑफ एल्वियोली? 350, क्योंकि 150 डेड स्पेस वॉल्यूम है. तो मैंने क्या डेफिनेशन क्या लिखा, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एयर एक्सचेंज एट द साइट ऑफ एल्वियोली पर मिनट. तो एल्वियोलर वेंटिलेशन रेट इज इक्वल टू रेट ऑफ ब्रीथिंग इनटू टीवी माइनस डेड स्पेस. टीवी माइनस डेड स्पेस वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा आपका 12. हम लोग देखो बाई डिफॉल्ट अगर आपको कुछ दिया नहीं है कैलकुलेट करने के टाइम में, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में आता है पर मिनट पूछेगा, पर आवर पूछेगा, पर 2 आवर 3 आवर ऐसे पूछ सकता है, ठीक है ना. तो अगर कोई आपको रेट ऑफ ब्रीथिंग आपको ऑप्शंस में दिया है, नहीं दिया, क्वेश्चंस में नहीं दिया है, तो यू हैव टू बाय डिफॉल्ट टेक इट एज 12. अगर कुछ दिया है तो फिर आप उसके हिसाब से काउंट करिए, कैलकुलेट करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो 12 into that is 500 minus 150, that is 350, is equal to 4200 ml हो जाएगा. What is the amount of air to be exchanged at the site of alveoli per minute? That is 4200 ml. समझ में आया कि नहीं? Now the question is, an instrument which is being used to measure all these, जितने भी हम लोग लेके उसको क्या बोलते हैं, स्पायरोमीटर. नाम सुने हो कि नहीं? स्पायरोमीटर में कौन सा मेजरमेंट नहीं होगा? तो अमाउंट ऑफ एयर, द एयर विच नेवर कम्स आउट, जो एयर ना कभी अंदर जाएगा ना कभी बाहर निकलेगा. आरवी, आरवी जो है वो फर्स्ट टाइम जब ब्रीदिंग स्टार्ट होता है एक बच्चे के केस में, तभी आरवी फुल हो जाता है. मतलब इट इज ओनली एट द टाइम ऑफ व्हाट ना, पैर्चुरेशन ऑफ ए बेबी, चाइल्ड बर्थ के टाइम में ये आरवी फुल हो जाता है. एंड मैंने आपको शायद बताया था, मुझे याद नहीं है, कि आरवी का प्रेजेंस और एब्सेंस डिसाइड करता है इफ इट इज द इन्फेंट बीइंग डाइड ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ. ठीक है, चाइल्ड बर्थ के टाइम में किसी इन्फेंट का अगर डेथ हो जाता है, तो कैसे इसको हम लोग डिटरमिन करेंगे, वेदर द डेथ ऑफ द बेबी is before parturition inside the uterus of the mother or it is after the parturition. अगर आफ्टर द parturition बेबी का डेथ हुआ होगा तो आरबी प्रेजेंट होगा लंग्स के अंदर, है कि नहीं? क्योंकि जैसे ही हेड फर्स्ट अपीयर होता है थ्रू द बर्थ कैनल, द ब्रीदिंग इमीडिएटली स्टार्ट्स. एंड जैसे ही ब्रीदिंग स्टार्ट होगा तो कौन सा एयर पहले फुल होगा? आरबी. एंड अगर ये डेथ बिफोर parturition हुआ है तो लंग्स कंप्लीटली कोलैप्स्ड होगा. There is no air present in the lungs. RV का भी importance है, but RV it is cannot be measured as it is comes never comes out. And RV और किस में involve है? FRC plus TLC. So which of the following cannot be measured through spirometer? अगर आप RV measure नहीं कर सकते हैं तो क्या FRC and TLC measure कर सकते हैं? No. हमने खाली उसको एक अंदाज लगा के इसको कैलकुलेट किया है. तो RV, FRC, TLC can't measure through spirometer. Next we are coming to the topic exchange of respiratory gases.
exchange of respiratory gases. And what is the prime site where the exchange takes place? What is the primary site where the exchange of gases takes place? Alveoli. And alveoli में जो exchange होता है by means of what? Na simple diffusion. So at alveoli by a simple diffusion. Diffusion process against the concentration gradient or with concentration gradient? With concentration gradient means always from high to low. ठीक है? So with need of ATP or without need of ATP? That is why diffusion is a passive process. So let's see. What are the factors which are associated with this simple diffusion? Factors affecting the rate of diffusion. Number one, solubility of gases. Solubility of gases. बताइए, higher the solubility, faster the rate of diffusion or slow the rate of diffusion? Faster. मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया. Solubility बढ़ेगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी फास्टर होगा. छोटा सा एग्जांपल देते हैं. Solubility of carbon dioxide is almost 20 to 25 times more than oxygen. याद रखिए, कार्बन डाइऑक्साइड का solubility रेट ज्यादा है, ऑक्सीजन का solubility रेट कम है, तो डिफ्यूजन कौन फास्टर होगा? कार्बन डाइऑक्साइड. 20 to 25 times more. इसीलिए ऑक्सीजन डिफ्यूज तभी होगा जब ऑक्सीजन ज्यादा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा. नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज हो जाएगा, ऑक्सीजन डिफ्यूजन होगा ही नहीं. नंबर टू, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस. पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस, जैसे कि हम बोल सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन दैट इज PO2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज व्हाट ना PCO. बताइए पार्शियल प्रेशर कैसे अफेक्ट करेगा रेट ऑफ डिफ्यूजन को? इंक्रीजिंग पार्शियल प्रेशर विल हैव द फास्टर रेट ऑफ डिफ्यूजन और स्लो रेट ऑफ डिफ्यूजन. जितना पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा? फास्टर होगा. हायर द पार्शियल प्रेशर, faster the rate of diffusion. मैं पार्शियल प्रेशर के बारे में एक लिस्ट दे दूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. जस्ट वेट. नंबर 3, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन. थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, देखिए मेम्ब्रेन जितना थीन होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना फास्टर होगा कि स्लो होगा? मतलब यहाँ पे इनवर्सली रिलेटेड है कि डायरेक्टली रिलेटेड? इनवर्स. लेस द थिकनेस
more the rate of decrease. यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं what is the exactly the site of respiratory gases exchange ना alveoli and blood vessel यही तो ये supposed to be alveoli हो गया and ये supposed to be what now that is blood capillary आप लोग next chapter में पढ़ेंगे and tissue chapter में मैंने बताया था एक चीज कि endothelium of the blood vessel is made up of what simple squamous epithelium and blood capillary देखिए blood vessels आपके बॉडी में तीन अलग अलग टाइप का है artery vein capillary and which is the thinnest and finest capillary why the capillary wall only made up of endothelium artery and vein में additional layer present है but capillary में सिर्फ और सिर्फ endothelium present है and endothelium is made up of what ना epithelium which epithelium ना squamous and squamous तो पहले से हम लोग जानते हैं simplest epithelium and alveoli the wall also made up of what squamous epithelium again so this is the site where the exchange takes place between the oxygen and carbon dioxide no free membrane where the exchange takes place and what is that free membrane the number one is squamous epithelium of alveolar wall second is endothelium that is also squamous of blood capillary and क्योंकि दोनों ही squamous है तो दोनों का यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा कि नहीं दैट इज द थर्ड लेयर बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ तो इसीलिए ये दोनों है सेलुलर लेयर दिस इज एसेलुलर तो हाउ मेनी सेलुलर एंड हाउ मेनी एसेलुलर ये है क्वेश्चन सिंपल है टू सेल्यूलर एंड वन एसेलुलर ये हम लोग पढ़े हैं कि बेसमेंट मेम्ब्रेन इज नॉट मेड अप ऑफ सेल ऑल्दो इट इज मेड अप ऑफ सेल प्रोडक्ट याद है एंड तीनों को मिला के ये squamous epithelium of the alveoli endothelium of the blood capillary and blood vessels and the basement membrane of both तीनों को मिला के इसका जो थिकनेस होगा 0.2 mm तो आप समझ सकते हैं कितना पतला होगा कितना थीन होगा and that is why the exchange takes place at the alveoli which is very fast the factors affecting rate of diffusion सबको समझ में आ गया let's have a make a list of this लिस्ट बना लेते हैं एटमॉस्फेरिक एयर और इंस्पायर्ड एयर then expired air then alveolar air then oxy blood
then deoxy blood, and then at the site of tissue. मैं 5 अलग अलग पोजीशन आपको दे दिया. हम लोग अभी देखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. एंड पार्शियल प्रेशर का यूनिट क्या है ना, मिलीमीटर पर मर्क्यूरी, mmHg. Let's see partial pressure of oxygen and carbon dioxide का different area, different site, different location. And उसी को बेस करके ही आपका क्या होगा ना, डिफ्यूजन हो. एंड डिफ्यूजन मैंने आपको बोला विथ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑलवेज फ्रॉम हाई टू लो. तो एटमॉस्फेयर में हो जाएगा 159 एंड दिस इज 0.3. तो एटमॉस्फेयर में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है 159 एंड कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 0.3. एक्सपायर्ड एयर 120 and 27. Alveolar air 104. Carbon dioxide is 40. Oxygenated blood 95, 40. Deoxy blood 40, 45. Tissue 40, 45. ये टेबल यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट. इसको बेस करके हम एक डायग्राम बनाएंगे जिसमें ये पूरा कहानी आपको समझ में आ जाएगा कि हाउ इज इट फ्रॉम हाई टू लो एंड व्हाट इज द साइट वेयर द एक्सचेंज टेक्स प्लेस एंड हाउ इट इज एक्सचेंज. जल्दी भरिए यूनिट जल्दी. Complete. Let's continue to the next page. Supposed to be, this is the right auricle, this is the right ventricle, and this is left auricle, and this is left. Partial pressure of oxygen मैं लिख देता हूँ, फटाफट लिखिएगा 40. Partial pressure of carbon dioxide 45.
that will be changed into partial pressure of oxygen 95 and that will be changed into 40. मैं यहाँ पे यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, हर जगह यूनिट सेम है, mm per mg, that is milliliter per mercury, mmHg. Here the partial pressure of oxygen is 104. Partial pressure of carbon dioxide is 40. एटमॉस्फेयर में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा 159 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है ना 0.3. टिश्यू में मैंने क्या बोला था, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा 40 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है ना 45. Now see everyone, for a minute everyone see here. This is actually at the site of atmosphere and ये क्या है ना alveoli. अब एटमॉस्फेयर में 159 है, alveoli में कितना 104, तो हाई टू लो मतलब एंट्री करेगा कि नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे क्या हो गया एग्जिट हो गया, तो ब्रीदिंग हो गया, हाई टू लो हुआ कि नहीं. नाउ alveoli के साथ आप कंपेयर करिए द ब्लड विच इज प्रेजेंट और कम्स टू alveoli. लंग्स को जो ब्लड सप्लाई होता है उस ब्लड का नाम क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फॉर वेंटिलेशन फॉर द एक्सचेंज. तो डीऑक्सीजनेटेड क्यों मैंने बोला, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड देखो ज्यादा है, ऑक्सीजन देखो कम है, PO2 देखो 40 है, PCO2 कितना है 45, तो ऑक्सीजनेटेड हुआ कि डीऑक्सीजनेटेड हुआ, किसके थ्रू सप्लाई होता है, उस ब्लड वेसल का नाम क्या है, पल्मोनरी आर्टरी. तो पल्मोनरी आर्टरी इसमें डीऑक्सी ब्लड पास किया कि ऑक्सी ब्लड, समझ में आ गया. अब डीऑक्सी ब्लड जब एल्वियोली में रीच करता है, देखिए ऑक्सीजन एल्वियोली में है 104 एंड डीऑक्सी ब्लड में देखो 40, तो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन एंट्री करेगा कि नहीं. So onloading of the oxygen by the alveoli and uploading of oxygen by blood, yes or no, onloading and uploading. Unload मतलब देना, upload मतलब लेना. तो यहाँ पे ऑक्सीजन को अपलोड कौन किया, ब्लड, अनलोड कौन किया, alveoli. Now uploading of oxygen in the blood leads to 40 80 change into what ना 95 and कार्बन डाइऑक्साइड देखिए alveoli में कितना है 40, कार्बन डाइऑक्साइड इन द डीऑक्सीडेटेड ब्लड कितना है 45, तो क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड एंट्री करेगा कि नहीं इनटू द alveoli, तो कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज कर जाएगा इनटू 40, सो 95 40, तो ये ऑक्सीजनेटेड हुआ कि डीऑक्सीडेटेड हुआ. This is coming to the what na left auricle by means of which pulmonary vein. Pulmonary vein में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसीलिए याद रखिए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आर्टरी एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेन. आर्टरी मतलब those blood vessel which is from the heart is called as what na artery and those blood vessel which is to the heart is called as what na vein. and यहाँ पे हार्ट से जो आर्टरी निकला है उसमें डीऑक्सीनेटेड है एंड यहाँ पे जो हार्ट में एंट्री करता है वेन उसमें ऑक्सीजनेटेड. सो ऑल आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट pulmonary artery and all vein carry deoxygenated blood except pulmonary vein. Now that pulmonary vein carrying the oxygenated blood into the left auricle से left ventricle से ये blood बाहर निकलेगा through what ना aorta. तो aorta में oxygenated हुआ कि deoxygenated, oxygenated. अब ये कहाँ पे reach करता है ना, at the site of cells or tissue.
टिश्यू में देखिए टिश्यू क्या करता है, ऑक्सीजन यूज करता है कि ऑक्सीजन रिलीज करता है? ऑक्सीजन यूज करता है, and what they are releasing carbon dioxide, and that is why at the tissue level oxygen is low and carbon dioxide is more. अगर आप कंपेयर करें तो ऑक्सीडेटेड में 95 है, टिश्यू में 40 है, तो टिश्यू विल गेट द ऑक्सीजन फ्रॉम द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे 45 है टिश्यू में एंड ऑक्सीडेटेड ब्लड में 40 है, तो कार्बन डाइऑक्साइड विल बी रिलीज्ड इनटू ब्लड। तो यहाँ पे ब्लड क्या किया, ऑक्सीजन अनलोड किया एंड कार्बन डाइऑक्साइड क्या किया, अनलोड अपलोड किया, लेकिन रिवर्स कहाँ पे था, एल्वेली। समझ में आया कि नहीं? नाउ इट बिकम्स व्हाट, now oxygen decrease किया, carbon dioxide increase किया, again becomes deoxygenated. Now all the deoxygenated blood from the different part of the tissue and body is to be collected by what, now vena cava, superior vena cava, inferior vena cava, and all the vena cava which carry the deoxy blood will comes to what, right auricle, right auricle से right ventricle, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू पास करेगा कि नहीं, लाइक दिस। समझ में आया? तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना, यूनिट, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। फिनिश करिए।